Hello students, so we are back with the videos of class 12 mathematics, and in the last video I told you about the properties of inverse trigonometric functions, जो कि मैंने आप लोगों से बोला था कि उसके प्रूफ के लिए आप लोग NCERT टेक्स्ट बुक्स रेफर कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो we'll be solving some problems based on inverse trigonometric functions, which is very helpful, very useful in further chapters also like calculus. Okay, so let's take up some questions from your NCERT exercise only. So let's see this first question, जिसमें हमें 3 sin inverse x is equals to sin inverse 3x minus 4x cube प्रूव करना है कि where x belongs to so and so interval. Okay, so इसको प्रूव करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी है प्लीज अंडरस्टैंड. मैं पहले RHS लेता हूं एंड RHS लेने के बाद I will put x is equals to sin theta. Okay, so that theta will be what? Sin inverse x, right? So putting in this, we get sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta. अब आप पूछेंगे sin theta ही क्यों पुट करा है मैंने? Because this is the formula itself of sin 3 theta. अगर मैं कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पुट करता तो मेरा फॉर्मूला नहीं बन पाता है ना. So 3 sin theta minus 4 sin cube theta किसका फॉर्मूला है? Sin 3 theta. So it becomes sin inverse sin 3 theta and property के हिसाब से it is equals to 3 theta है ना, क्योंकि sin inverse sin x क्या होता है? x होता है. So it should be 3 theta only. And since theta is sin inverse x, so my answer is 3 sin inverse x, and that is equals to LHS. Correct? Similarly, you can see the second question is same, in which you can put x is equals to cos theta. Okay, so you will get cos 3 theta, and similar तरीके से आपका 3 cos inverse x जो है वहां पे निकल जाएगा. Please try by yourself. Second question. I'm doing third question for you people. Third question is a proof question again, which says you have to prove that tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 is equals to tan inverse 1 by 2. This we have to prove. Okay, so मुझे पता है मेरा फॉर्मूला क्या है. tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, right? So we can take the LHS and we can just apply the formula where tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 will become equal to what? यहां लिख सकता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना. will become equal to this guy, जहां पे मेरे को x और y में वैल्यूज पुट करनी है. so that is equals to tan inverse in bracket x plus y, which is 2 by 11 plus 7 by 24 upon 1 minus 2 by 11 into 7 by 24, because it is 1 minus xy. Correct? So that is equals to tan inverse. Now you have to just simply solve it. So it will become what? The LCM will be 264. Okay, and this becomes 11, 24, 48 plus 77 into LCM लेके ऊपर चला जाएगा. This will become 264, right? And this has to be 240, 250, है ना? 250, because it will be 264 minus 14, which will be 250. Correct? So 264 and 264 are cancelled, and this is tan inverse 125 upon 250, and that is equals to tan inverse half only, and that is equals to RHS. Okay, समझ में आ गया है ना किस तरीके से अप्लाई करना है. Let's take one more question. Okay, so here we have, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में we have something extra with us. Okay, we have something extra with us. So 2 tan inverse half plus tan inverse 1 by 7 is equals to tan inverse 31 by 70. Okay, this we have to prove. Extra क्या है यहाँ पे? 2 tan inverse x मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो पहले मैं इसको रिड्यूस करूंगा
tan इनवर्स वाले फॉर्मूला से, उसके बाद मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार. ओके, नॉट राइटिंग इट अगेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग LHS and let's take LHS, which is 2 tan inverse half plus tan inverse 1 by 7. Let's apply the formula of 2 tan inverse x plus, which is tan inverse 2x upon 1 minus x square means 1 by 4. Correct? Okay. So this is equals to, obviously we get tan inverse 1 by 7 ऑल्सो, राइट, क्योंकि हमने 2 tan इनवर्स x का यहां फॉर्मूला लगाया है. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो दिस विल बिकम 2 and 2 are cancelled, so this is 3 by 4. 3 by 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा. This will become tan inverse 4 by 3, correct, and this is tan inverse 1 by 7, right. Now I can apply tan inverse x plus tan inverse y. So this will become tan inverse x plus y, which is 4 by 3 plus 1 by 7 upon 1 minus xy, which is 4 by 3 into 1 by 7. Correct? So that is equals to tan inverse. LCM अगर आप लेंगे, so this will become 21. Okay, so 3 7 4 is 28 plus 7 3 1 is 3 into, मैं इसको ऊपर भेज रहा हूँ, LCM लेके रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, and this will be 21 minus 4, so it will be 17. Correct? So 21 and 21 are cancelled, and मुझे क्या चाहिए था, RHS में 31 by 17. Okay, so my answer is tan inverse 31 by 17 only. Okay, and that is equals to RHS. Okay, तो एक्स्ट्रा वर्क क्या था हमारा, कि हमने यहाँ पे 2 tan inverse x का फॉर्मूला पहले यहाँ पे लगाया है, उसके बाद हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई करके उसको प्रूव करा, रिड्यूस करा. ठीक है, so I think bit questions I have done today. In the next video we'll take up some more questions, but till then you can solve your problems up to this question or you can move ahead. I think exercise 2.2 आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो you will get more idea कि किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करने हैं. So in the next video we'll discuss some more questions regarding this topic. So till then be safe, be at home only, अपना काम कंप्लीट कीजिए and be happy. Thank you so much.